and gentlemen, you are watching Unati Horror Stories World YouTube channel. I am Admin Sunny, and today in this video I have decided to make a video on various locations. Those are dated, and people used to say that they are haunted, but I don't know why they are haunted, but still it's our duty as a creator to put up the important points why the people recall it as haunted. So today I am talking about a very beautiful city and capital of great India, that is New Delhi and Delhi. Okay, some of the reportedly haunted places in Delhi include Agarsen ki Bauli and Delhi Cantonment area, Bhul Bhure. This is a very unique type word, that is Bhuli Bhutiyari ka Mahal. What a terrific name. And Jamali, Kamali, Mosque and Tomb. And you can say a Khooni Darwaja. Now what is the story behind these wonderful names that I will going to discuss one by one. Once again I repeat, please hit the subscribe bell and like under this video so that you never miss the upcoming video, and also share the link of WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook, so that other knows us better and they can also able to watch this video. Some of the very haunted places in the area of Delhi, that is Agarsen ki Bauli, Delhi Cantonment area, and Bhuli Bhutiyari ka Mahal, Jamali, Kamali, Mosque and Tomb, and the Khooni Darwaja. Now, other locations where eerie legends are Lothikali Cemetery and Delhi Code and Charminar. They are also included in this. Agarsen ki Bauli. Now what is this? A 14th century Israel in Delhi. You can call it New Delhi. It is believed for being haunted. Delhi Cantonment area. The more desolated parts of this area are rumored to be haunted, with tales of a female in white sari roaming after 12 o'clock night, and not daily she used to be seen by the people, by the public residing there. Now a white sari female seen so many times by so many people out there. Now here, next one is Bhuli Bhutiyari ka Mahal. Now this is a very unique name. This is the ruin of a 14th century hunting lodge in Karol Bagh, said to be haunted. Now Jamali, Kamali, you can also spell it Jamli, Kamli, Mosque and Tom. What is the real pronunciation I don't understand, but I think it is Jamali Kamali. That will be better. Located in Mehruli, this very unique site is rumored to have invisible forces, slapped people and different types of ghost voices from the grave coming out from there in this area of the mosque. Now, Khooni Darwaja, this historic gate is associated with the history of Dead Shed and is believed to be haunted. Now, there are so many types of people talking too much and some are talking the reality. Other reportedly haunted locations like Lothiana Cemetery believed to be haunted by the ghost of a British officer. Karkar Duma Delhi Court reports of paranormal activities and ghostly
appearance have been filled with some footages reportedly captured as surveillance cameras. Charminar, located in the village of Hoj Khas, this structure is thought to be haunted by the spirits of thieves. Wow, very, very dangerous stories settled and connected with these areas. And I move further about the story of this Bhuli Bhatiyari ka Mahal. What is this? Now, this I will want to discuss is in detail that some other most haunted places in New Delhi are also associated with different types of paranormal activities. Horror places in Delhi, the hunting secrets. Delhi is the capital city of India and is a little melting point of the old and the new thought famous regarding this fact that thoughts famous for its terrific jams, huge traffic and bazaars and many more. There is a multi-site which is still buried in the secretive corridors of its historic buildings and behind the walls of Hornwoods. Many scares have remained in the city's history. Therefore, a number of ghost stories, terrifying stories, and sites that have continued to be interested for the people who want to know something about normal and paranormal to interest and frighten generations. The purpose of visiting these horror places in Delhi is to capture the different sides of the city that is not described in the beautiful travel books. All the spots in the cities have their own dark history which makes tourists seeking the paranormal thrilled. Wow. Stretching from fort to town, forest and homes for the spirits. These are the top 10 horror places in Delhi, I think, in India, regarded as the very, very horrifying and crushed with disturbances by spirits and other worldly forces. People in those regions think so, not me, because it is believed that the souls of the people who died and disappeared have been very, very certain and very, very other types of accidents or all wonders in these places after the death, because that death was not normal, that was accidental, filled with tales of ghosts, sighting ghostly voices and a couple of other paranormal activities. These places are great for the culture lovers who dare to explore these places at the night time. Therefore, if you love the creature of the night or enjoy a good mystery, Delhi most horror places, you can go and enjoy, but at your own risk. Delhi most horror places will provide you with a spin-chilling tour to the world of unknown ghosts. Now, here are some horror places in Delhi which are said to be haunted. I don't know. So many Agrasen Ki Pauli, and now another few names are related with ghostly activities. One of them is Sanjeevan. Sanjeevan is the massive forest that has inhabited Delhi city center. This forest is well known for its silence, so spirits latest
spots attract many curious visitors. The locals place much stock in this theory because there are simply so many accounts of haunting noises and strange lights flickering at all hours of the night after 12 o'clock night. If you are one who loves some real life horror, then no doubt it's one of the best horror places in India in Delhi. Delhi Cantonment area. Now what is the story behind this area, Cantonment area? This place is believed to be haunted and one of the most popular sites as a horror spot in Delhi. These have been countless stories of a woman wearing white sari and standing by the roadside in the middle of the night asking for a lift, for a ride from a rider, especially popular among car drivers and passengers as well as pedestrians. This place still makes people afraid who dares to drive by night through this site after 12 o'clock night. It's definitely one of the horror places in Delhi if you love an abandoned place to visit. Bhutiya, what is this? Bhutiya ka Mahal. The Bhutiya ka Mahal is a medieval Tury hunting lodge located at Jandewala area of Delhi, and the place has the offbeat charm among Delhi's best horror places in Delhi. People advise not to visit this place after dusk. They said that some people reportedly hearing whispers and people laughing inside the building, which contributes to increasing the haunted reputation of this place. This is a unique name, Firoz Shah Kotla Fort. Wow, this is a very, very famous fort, I think, in the history of India. This old fort was constructed by Sultan Firoz Shah Tughlaq and local people believe that the fort was cursed by devil spirit and tourists visit the horror place in Delhi to have a feel of thrill, but at Firoz Shah Kotla people offer letters to the unknown spirit and write letter to safety and what they wish. It is very serene locally, hence creating a suspense while walking around the fort, compounded by its Unati passage. Now, Jamali Kamali Mosque and Town. What is this? This is a tomb. Another example is this mosque is Mehruli, New Delhi, which is considered as a haunted place and many are stories associated with it. Research is spiritual and sighting has indicated that people have witnessed strange activities and even they heard some very, very spooky sounds like laughing or whispering and have experienced touched by spirits. They feel that somebody, some type of spirit touched them. It is one of the most haunted places in Delhi. This mosque will be great for those who like to visit place which nobody knows at night after 12 o'clock. Village. It is a large area rising to the swarm forest close to Delhi University has all sorts of spooky legends associated with it from pre-independence British times. People have reported to have seen the ghost of
the British soldiers and to hear eerie noises when it comes to top horror haunted places in Delhi and in New Delhi and in India. Now, Lothian Cemetery. Now, what is this? This is a cemetery, and any cemetery is spooky by default, and yet some considered to be more spooky than other, namely Lothian Cemetery. This is one of the oldest cemeteries in Delhi, and many people have been chased by some ghost. A headless ghost is said to be roaming here and there from one place to another. It is one of the horror places in the Delhi, especially if you are a person that fans at the sight of the supernatural at night time after 12 o'clock night. Now, what is the total conclusion about all these things? Without seeing by the eyes, I think it is not easy to understand and believe on these stories. So conclusion is this, that so it is not only about historical places to visit and shop to buy things from, it's also about some of the mysterious darkness in Delhi. Here are the top horror places in Delhi. Delhi is filled with spirits, ghost stories, history, mystery horror places, 3 horror places to visit, and the Aapki Najar, mysterious venue PF. And so, without watching all these things by our own eyes, it's hard to understand and believe. But these are all rumors or stories or reality we don't know. Our duty is to put up the reality in fact in front of the people, in front of the fans, the viewers, the watchers. So thank you for watching. I have told you about the Delhi and many more places to visit yet. Our stories will get to come very soon about New Delhi and nearby areas. Keep on watching so you never miss our upcoming videos. So for that, you just have to click on subscribe, bell and like these 3 buttons below this video, and share the channel and video link on WhatsApp group, Facebook, Instagram and Pinterest. Thank you for watching. And one more thing, please follow our Facebook page, Instagram and Threads also. Thank you so much. God bless you. Hello guys, welcome. Admin Sunny here. Today I will going to tell you a story that is a real story of a most haunted very old bungalow located in the city of Meerut, Uttar Pradesh. This bungalow is treated and regarded as the most haunted bungalows of all time in India. The haunted bungalow in Meerut is a very dangerous type mansion located in the GP block. This area, it is regarded as the GP block, formerly an Indian Defence Force sub-area office, which is now subject to local legends of paranormal activities. Stories describe the sightings of multiple ghosts, including a girl in a red dress, means a woman in a red sari. The spirits
of two children and a group of four drunk men lighting up the candle, taking up the cigarette and all. Despite its eerie reputation, the property is still under the custody of army control. Now, the location of the building. Regarding that, I will go to tell you the building is situated in the GP block, an area that remains under army protection. History. While its specific past in unclear architectural evidences suggest it was once home to a wealthy individual before being repurposed as surveyor office for the Indian Defence Forces. Reported a paranormal sighting in this area. It has been reported a lady in a red sari seems to be coming out of this bungalow. Some say that a girl in a red dress is frequently seen wandering the premises. The spirits of two children are also reported to appear. Locals claim to have seen a group of four drunk teenagers inside the building, lighting up the candles in the night time and sitting around that candle and enjoying the cigarette and all. Now the current state of this mansion is now in a state of severe disrepair, with many reports describing it as being filled with cobwebs and bats. So now there are so many things, so many people saying different things about this bungalow located in GP block Meerut. Now the situation of Meerut haunted building block, facts or fictions. Meerut branches of trees blocking the entire view of three dilapidated buildings are deadly silence. Around the bungalow on a full moon night, it could be an idle sitting for a horror flick. Welcome to Meerut GP block, a compound with three spacious buildings in which nobody lives. In fact, nobody has cared or perhaps dared to stay here since the year 1930s. Located near a renowned school and behind barricade halls in the city's area GP block, often referred to as the haunted place in Meerut, may not have had people living there for decades, but was not associated with ghosts either. However, in 2011, means 2011, after a national news channel reported that it was among the 10 most haunted sites of India, locals began exchanging all kinds of stories. Some said they had seen four boys drinking beer in candlelight on the rooftop of one of the buildings, and others claimed they had witnessed a woman dressed in red sari and coming out from this haunted GP block Meerut bungalow. The ground floor of one of the buildings currently act as a house for a group of 6 people who have been asked by the army to stay there to look after the building as caretakers. Arvind, one of them says, I have been living here since the past 8 months. I have never seen anything, which sent
severe and wrong information, wrong news to the entire world about the split and all. But literally my mother did see something unnatural added. And now on the future queries he reveals that a month back his mother saw a lady in a red dress at night. She was extremely afraid after that incident, but we compelled her to stay calm and stay back. As the spot is located opposite St. Mary's Academy, students often try to sneak in but have never been successful in doing so. Sharad Bhatia, a class 11th student, says, I have always been curious to know about the place. One can read all sorts of stories, bad thinkings about this place on Google, but to know the truth behind story, whenever my friend and I try to get in, the locals inform police and we are shooed away. So these are few things which has been noted by so many of them, boys and girls and all from various schools. But did any of the students see anything unnatural ever? Satyarth Sharma says, I have always heard about such things, though I have not seen any of them. But due to paranormal tales associated with the place, I have never tried getting inside the buildings due to fear and all. In an attempt to know more about the history of the place, TOI, Times of India got in touch with some of the noted historians in the city and heard a completely different version. Dr. Amit Pathak, a historian and a radiologist, says this place used to be a military establishment in the 1930s, but it has been lying vacant ever since, and thus it has been termed haunted place. So why does the internet suggest otherwise? It was only after a news channel reported that GP Block in Meerut is one of the 10 most haunted places in the country. That such rumors started. Now everybody in the city associates it with ghost, says Pathak, adding that there had been talk of converting the establishment into a library or a museum, but nothing has been finalized yet till the date. People living in area still swear by the presence of ghosts here, but science and psychology refute it completely, haunted or not haunted, and are the other matters. So there are so many of things going around the entire world. Sometimes people used to just damage the name of a particular object as a room or bungalow or auditorium and all. So this is our interpretation about the video that GP block located Bangalore is haunted or not haunted. But in this very time, so many YouTubers from the media industry went there and stayed at night. So many, few of my friends, those are YouTubers of dealing with paranormal activities, and they went there and they spent the whole night and they witnessed nothing at all. So please avoid the fake informations. And one more thing, if you see that there is nothing, never try to go there alone. It may be harmful to your life, to your family. So this is, as a creator, is my advice. Thank you very much for watching this video, and remember one thing, my
The second video is coming in Hindi language also, so that my other Hindi friends and fans can understand in their Hindi language. We are promoting this video in three languages, English, Hindi and Korean. So two more videos is about to enter and translated by me so that other language candidate can able to understand the real, because this is a real story and everyone should know and aware of this reality. That's why I'm creating this story in three languages. Thank you very much for watching this video. Make sure to get another upcoming video, you have to just hit the subscribe bell and like these three buttons under this video, and after that you have to share on WhatsApp groups, Facebook pages, Instagram and Pinterest. Thank you so much. Love you all. उसने गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ाई की थी और अब वह शहर में आकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शहर में उसने एक पुराने मोहल्ले के किनारे एक संकरी गली में छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था। उसी में उसका पूरा गुजारा हो रहा था। रीना के माता पिता बहुत ही गरीब थे। बड़ी मुश्किल से वह हर महीने उसकी पढ़ाई और रहने का खर्च भेज पाते थे। अक्सर रीना सोचती, इतने पैसों से मेरा क्या होगा? मुझे तो कुछ करना ही होगा, वरना मेरे साथ साथ बाबूजी को भी परेशानी होगी। इसी बीच एक दिन उसके बाबूजी की चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, बेटी, इस बार घर की छत गिर जाने से हमें काफी नुकसान हो गया है, इसलिए इस महीने तुम्हें कम पैसे भेज पाएंगे। ये पढ़कर रीना बहुत परेशान हो गई। शाम को वह मोहल्ले की किराना दुकान पर कुछ सामान लेने खड़ी थी। तभी वहां एक विदेशी सी दिखने वाली लड़की आई। वह हिंदी तोड़ मरोड़ कर बोल रही थी, क्या यहाँ आसपास कोई सस्ता कमरा मिलेगा किराए पर? दुकानदार ने बस सिर हिलाया। लड़की पूछकर आगे बढ़ गई। रीना को लगा शायद ये भी उसकी ही तरह नई शहर में आई है। वह जल्दी से पीछे दौड़कर बोली, रुको, मैं भी इसी मोहल्ले में किराए के मकान में रहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, किराया हम आधा आधा बांट देंगे। लड़की ने राहत की सांस ली। वाह, ये तो अच्छा होगा। दरअसल मैं इस शहर में नई हूँ और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मेरा नाम लीसा है। रीना ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। मैं रीना हूँ, चलो अब तुम मेरे साथ ही रहो। बस फिर क्या था, दोनों सहेलियां एक साथ रहने लगी। धीरे धीरे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों कॉलेज के बाद देर तक बातें करती, साथ खाना बनाती और हंसती खेलती। पर कुछ ही हफ्तों में दोनों पर पैसों की मार पड़ने लगी। रीना अपने बाबूजी से पैसे नहीं मांग सकती थी और लीसा का तो इस शहर में कोई था ही नहीं। एक रात लीसा ने कहा, अगर हमें इस शहर में टिकना है तो कोई काम देखना ही पड़ेगा। रीना बोली,
रही हो, पर मैं कॉलेज भी जाती हूँ। नौकरी करना मुश्किल होगा। कोई छोटा मोटा काम हो तो कर सकते हैं। दोनों देर रात तक सोचती रहीं, पर दिमाग में कोई ठोस विचार नहीं आया। उसी समय उन्हें तेज भूख लगने लगी। लीसा फटाफट किचन में गई और नूडल्स बनाकर ले आई। वह नूडल्स इतनी स्वादिष्ट थी कि रीना चुपचाप खाते खाते सोच में पड़ गई। अचानक उसने ताली बजाई। आ गया, मुझे आइडिया मिल गया। लीसा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आइडिया? रीना बोली, तुम्हारा चाइनीज फूड इतना बढ़िया होता है कि कोई भी खाकर दीवाना हो जाए। यहाँ हमारी बस्ती में कोई चाइनीज नहीं बेचता। बस एक गोपीनाथ नाम के मोटे अंकल हैं जो महंगा बेचते हैं। अगर हम सस्ता चाइनीज फूड बेचें तो हमारी दुकान जरूर चलेगी। लीसा हंस पड़ी। ये तो कमाल का आइडिया है। मैं सारी चाइनीज चीजें बनाना जानती हूँ। तुम बस मेरी मदद कर देना। रीना बोली, बस तय रहा, कल से काम शुरू। अगले दिन दोनों ने अपने अपने पैसे जोड़कर सामान खरीदा। बस्ती के बाजार के कोने में उन्होंने अपना ठेला लगाया और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, आइए आइए, स्वादिष्ट चाइनीज खाइए, बस 10 रुपये से शुरू। लोग 10 रुपये का नाम सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने आकर मोमोज, नूडल्स और फ्राइड राइस खाना शुरू किया। जब लोगों ने चखा तो उंगलियां चाटते रह गए। पहले ही दिन उनके ठेले पर इतनी भीड़ लगी कि 2 घंटे में सारा सामान खत्म हो गया। रीना खुश होकर बोली, मुझे यकीन था कि तुम्हारे हाथ के खाने पर लोग फिदा हो जाएंगे। लीसा मुस्कुराकर बोली, अब तुम कल ही सबसे पहले अपने कॉलेज की फीस भर देना। बाकी पैसों से हम और सामान ले आएंगे। उस रात दोनों चैन से सोए। कुछ ही हफ्तों में उनका ठेला पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। लोग लाइन लगाकर चाइनीज फूड लेने आते। उधर गोपीनाथ की दुकान पर ताला लगने लगा। उसके ग्राहक अब रीना और लीसा के पास आने लगे थे। गोपीनाथ को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन वह खुद ग्राहक बनकर उनके ठेले पर पहुंचा और खाना चखा। खाकर उसे मानना पड़ा, सच में इस लड़की के हाथ में गजब का स्वाद है। दाम भी कम है। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में जलन बढ़ने लगी। इसी बीच एक दिन लीसा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे चक्कर आकर वह गिर पड़ी। रीना उसे डॉक्टर के पास ले गई, दवाइयां भी ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लीसा की तबीयत इतनी खराब हो गई कि ठेला लगाना बंद करना पड़ा। गोपीनाथ की दुकान फिर से चलने लगी। वह मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन रीना परेशान थी। उसने लीसा को हर हॉस्पिटल में दिखाया, पर हालत जस की तस रही। एक रात जब लीसा बिस्तर पर पड़ी थी और रीना उसके पास बैठी थी, लीसा बोली, मेरी वजह से अब ठेला भी नहीं लग पा रहा है। तुम कॉलेज की फीस कैसे भरोगी? रीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत सोचो, तुम्हारी वजह से ही तो मैं इतनी कमाई कर पाई हूँ। तुम चिंता मत करो। रीना पूरी रात उसके पास बैठी रही। बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई पता नहीं चला। पर अगली सुबह लीसा ने आंखें नहीं खोली। वह हमेशा के लिए चली गई। रीना यह सहन नहीं कर पाई। वह दिन भर रोती रही, खाना भी नहीं खाया। हर वक्त कोने में बैठी लीसा को याद करती। अचानक उसके कंधे पर एक हाथ आया। वह पीछे मुड़ी तो सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। रीना डर गई। चुड़ैल बोली, डरो मत, मैं लीसा हूँ, तुम्हारी दोस्त। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे पता है तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं और तुम्हें उनसे ही सारी उम्मीद है। चलो आंसू पोंछो और कुछ खा लो। उस रात लीसा की आत्मा ने अपने हाथों से रीना को खाना खिलाया। अगले दिन रीना ने हिम्मत जुटाई, कॉलेज गई और शाम को ठेला लगाने की तैयारी करने लगी। लीसा चुड़ैल ने फटाफट मोमोज तैयार कर दिए। रीना हैरान रह गई, तुम इतनी तेजी से कैसे बना लेती हो? लीसा मुस्कुराई, अब मैं आत्मा हूँ, मेरे हाथ बहुत तेज चलते हैं। बस फिर दोनों ने ठेला लगाया। बाजार में भारी भीड़ जुटी। लोग खुशी खुशी चाइनीज खाने आए। उस दिन के बाद लीसा चुड़ैल अकेले ही ठेले की तैयारी करती। रीना बस शाम को 2 घंटे के लिए मदद कर देती और बाकी समय पढ़ाई में ध्यान देती। लीसा की मदद से रीना ने अपने फाइनल पेपर्स अच्छे से दिए। जब रिजल्ट आया तो रीना कॉलेज में टॉप कर गई। उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। वह दौड़कर खुशखबरी अपनी सहेली लीसा को सुनाने आई। देखो, मैं टॉप कर गई, मुझे विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। लीसा की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है, ये जीवन की सबसे प्यारी यादें थी जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई। शायद भगवान ने अच्छा ही किया कि मुझे अपने पास बुला लिया, वरना तुमसे बिछड़ कर मुझे तकलीफ होती। आज जब तुम सफल हो गई हो तो मेरा मकसद पूरा हो गया। इतना कहकर लीसा चुड़ैल ने रीना को गले लगाया और अलविदा कहकर हमेशा के लिए चली गई। रीना विदेश चली गई। पढ़ाई पूरी करके वह शहर लौटी
तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपने माँ बाप को भी शहर बुला लिया। वर्षों बीत गए, पर रीना ने अपनी सहेली लीसा और उसके हाथ के चाइनीज खाने को कभी नहीं बुलाया। रीना, रीना, लीसा। हेलो बहन भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ, हमारा काम है आपके लिए शानदार से शानदार वीडियो लाना, और आपसे एक ही अनुरोध है कि आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बेल और लाइक को नहीं अभी तक दबाया है तो क्लिक कर दें, और इस वीडियो को और इस चैनल के लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों को भी आनंद आ सके जैसा कि अभी अभी आपको आया है। तो इसी तरह सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखें, और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। शुक्रिया। हेलो बहन भाइयों, आप देख रहे हैं एसडी उन्नति एनिमेटेड हॉरर स्टोरी। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसके नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को, बेल आइकॉन को और लाइक बटन, तीनों बटन को दबाने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट आदि ग्रुपों में इस वीडियो के लिंक को और इस चैनल के लिंक को शेयर कर देना चाहिए। चलिए देखते हैं आपके साथ आज की ये हॉरर स्टोरी। लेट्स बिगिन। यहाँ आपके दिए गए कंटेंट पर आधारित डावोनिक शब्दों का हिंदी लेख प्रस्तुत है, जिसमें श्रीलंका के प्रतिपादित हॉन्टेड स्थानों, कथाओं और आत्माओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्रीलंका के डरावने और प्रतिपादित स्थल। श्रीलंका एक छोटा सा द्वीप देश है, जिसे उसकी प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन मंदिरों, समुद्र तटों और सांस्कृतिक विविधता के लिए पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इस खूबसूरत भूमि का एक दूसरा पहलू भी है, रहस्य, अंधविश्वासों और भूत प्रेतों की कहानियों से जुड़ा हुआ। यहाँ सदियों पुरानी कथाएं, लोक कथाएं और भूतिया किस्से प्रचलित हैं, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के बीच जिज्ञासा और भय पैदा करते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं श्रीलंका के कुछ प्रसिद्ध हॉन्टेड प्लेसेस और लोक कथाओं में वर्णित आत्माओं के बारे में। गाले फेस होटल, कोलंबो। गैली फेस होटल, कोलंबो। कोलंबो शहर के फोर्ट डिस्ट्रिक्ट में स्थित यह ऐतिहासिक होटल 9वीं सदी से पर्यटकों और राजनीतिकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन इसके बारे में एक रहस्यमयी कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ एक अंग्रेज सैनिक की आत्मा भटकती है। माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी, और तब से वह होटल के गलियारों में घूमता दिखाई देता है। होटल के कुछ कर्मचारियों और मेहमानों का दावा है कि उन्होंने सफेद वर्दी पहने एक सैनिक को देखा है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह गायब हो जाता है। रात के समय, खासकर पुराने विंग में, मेहमानों को अजीब कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं और दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस भूतिया सैनिक की कहानी को सच्चा मानते हैं। 2. राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम ऑफ कोलंबो। श्रीलंका का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित नेशनल म्यूजियम ऑफ कोलंबो भी रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा माना जाता है। यहाँ कई सदियों पुराने अवशेष, मूर्तियां, प्राचीन पांडुलिपियां और राजघरानों की वस्तुएं संरक्षित हैं। लोक कथाओं के अनुसार इन प्राचीन वस्तुओं में से कुछ पर आत्माओं का वास है। कई कर्मचारियों ने दावा किया है कि देर रात गैलरियों में अजीब सरसराहट, छायाएं और किसी के
चलने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि यहाँ रखी गई एक शाही तलवार से जुड़ी आत्मा संग्रहालय के गलियारों में भटकती है। मोहिनी श्रीलंका की प्रसिद्ध आत्मा, श्रीलंका की सबसे प्रसिद्ध और डरावनी आत्माओं में से एक है मोहिनी। लोक कथाओं में मोहिनी को एक सुंदर और आकर्षक महिला के रूप में वर्णित किया गया है, जो सफेद वस्त्र पहने रहती है और अक्सर गोद में एक बच्चा लिए हुए दिखाई देती है। कहा जाता है कि मोहिनी मुख्य रूप से अकेले पुरुषों को निशाना बनाती है। वह अक्सर श्मशान घाटों, सुनसान सड़कों और जंगलों में रात के समय दिखाई देती है। पुरुष उसकी सुंदरता के मोह में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में मृत्यु हो जाती है या वे पागल हो जाते हैं। मोहिनी की कहानियां श्रीलंका के ग्रामीण इलाकों में बहुत प्रचलित है और इसे सबसे भयावह प्रेतों में से एक माना जाता है। 4. जनरल्स हाउस नुवारा एलिया। जनरल्स हाउस नुवारा एलिया। नुवारा एलिया के खूबसूरत पहाड़ी इलाके में स्थित जनरल्स हाउस प्रेतबाधित जगहों में गिना जाता है। यह 19वीं सदी में बना था और कभी सांसदों और उच्च अधिकारियों का अवकाश गृह हुआ करता था। कहा जाता है यहाँ एक महिला की रहस्यमय मृत्यु हुई थी और उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है। लोक कथाओं के अनुसार एक सांसद ने साहसवश इसी कमरे में रात बिताई जहां वह महिला मरी थी। रात के लगभग 2 बजे जब वह वॉशरूम जाने उठा तो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह गिर पड़ा और उसकी ठुड्डी चोटिल हो गई। उसने बताया कि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी ने उसे धक्का दिया था। आज भी इस घटना की चर्चा होती है और जनरल्स हाउस को रहस्यमय जगह माना जाता है। हेल्गास फॉली कैंडी। कैंडी में स्थित हेल्गास फॉली एक चेटो स्टाइल होटल है जो अपने अजीबो-गरीब कला और डरावने माहौल के लिए प्रसिद्ध है। शुरुआत में इसे एक निजी आवास के रूप में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे होटल में बदल दिया गया। यहाँ की दीवारों पर विचित्र और भूतिया चित्रकारी की गई है, जो इसे और भी रहस्यमय बना देती है। कहा जाता है कि इस होटल की ऊपरी मंजिल पर एक आत्मा रहती है, जो कभी-कभी मेहमानों को महसूस होती है। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी और किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी महसूस की। 6. वॉल्वेंडाल चर्च कोलंबो। वॉल्वेंडाल चर्च कोलंबो के बेत्ता इलाके में स्थित ये 7वीं सदी का चर्च आज भी रविवार को प्रार्थना सभाएं आयोजित करता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद इसका वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। कहा जाता है कि यहाँ दफनाए गए डच काल के मृतकों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी एक डच कबरने की बेटी की, जिसकी दुखद मृत्यु चर्च के परिसर में हो गई। स्थानीय लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा रात के समय यहाँ घूमती है। कई लोगों ने कदमों की आवाजें, अजीब आकृतियां और ठंडी लहरें महसूस की हैं। डच हॉस्पिटल शॉपिंग प्रीसिक्ट। कोलंबो में स्थित ये स्थान कभी डच औपनिवेशिक काल का अस्पताल था। आज ये एक आधुनिक शॉपिंग और डाइनिंग सेंटर है, लेकिन इसके बारे में भी भूतिया कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक डच अफसर की मृत्यु हुई और उसकी आत्मा अब भी यहाँ मंडराती है। कुछ पर्यटक दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ अजीब आवाजें सुनी और ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। निष्कर्ष, श्रीलंका की पहचान केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर से ही नहीं, बल्कि यहाँ की लोक कथाएं, रहस्यमय घटनाएं और भूतिया कहानियां भी इसे विशेष बनाती हैं। गालिफेस होटल और नेशनल म्यूजियम जैसे आधुनिक स्थल आज भी अद्भुत आत्माओं से जुड़े हैं। मोहिनी जैसी लोक कथाएं ग्रामीण समाज की गहरी मान्यताओं को दर्शाती हैं। जनरल्स हाउस, हेल्गास फॉली, वॉल्वेंडाल चर्च और डच हॉस्पिटल जैसे स्थान पर्यटकों और स्थानीय लोगों की जिज्ञासा और भय दोनों का कारण बने हैं। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां रहस्य, भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों की कहानियां उसकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। जो भी व्यक्ति यहाँ घूमने आता है, उसके मन में इन कहानियों को सुनकर रोमांच और भय दोनों ही पैदा होते हैं। हेलो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ, हमारा कामयाब के लिए शानदार से शानदार वीडियो लाना रहा
शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों को भी आनंद आ सके, जैसा कि अभी अभी आपको आया है। तो इसी तरह हेलो बहन भाइयों, आप देख रहे हैं एसपी उन्नति एनिमेटेड हॉरर स्टोरी। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसके नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को, बेल आइकॉन को और लाइक बटन, तीनों बटन को दबाने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आदि ग्रुपों में इस वीडियो के लिंक को और इस चैनल के लिंक को शेयर कर देना चाहिए। चलिए देखते हैं आज के साथ आपकी ये हॉरर स्टोरी। लेट्स बिगिन। North Korea is one of the most secretive and politically isolated countries in the world. Due to its tightly controlled people, very little is publicly known about everyday life there, let alone mysterious or paranormal phenomena. Yet, despite the nation's secrecy, rumors and urban legends persist, particularly surrounding a handful of eerie, abandoned, or restricted sites. While these stories cannot be confirmed independently and often carry political undertones, they offer a fascinating glimpse into how mystery, fear, and folklore survive even in the most closed societies. Ryugyong Hotel, the Hotel of Doom. The Ryugyong Hotel is perhaps the most notorious structure in North Korea, and arguably the most famous rumored haunted site in the country. Construction of this massive 105-story pyramid-shaped skyscraper in Pyongyang began in 1987 with the goal of becoming the tallest hotel in the world. However, the project was abruptly halted in 1992 following North Korea's economic collapse after the fall of the Soviet Union. For over a decade, the skeletal, windowless tower loomed ominously over the capital, earning it nicknames such as Hotel of Doom and Phantom Pyramid. Locals allegedly spoke of eerie lights flickering at night, despite the building having no electricity. Some even claim that spirits of dead laborers haunt the premises, although there is no solid evidence to support this. While construction resumed in the late 2000s and the exterior was eventually completed, the hotel has never fully opened to the public. Its mysterious, incomplete status and lack of clear purpose continue to fuel paranormal theories. Tourists are not allowed to enter, and reports of ghostly sightings, unexplained sounds, or sudden silences in its surroundings persist. 2. Kijongdong, the Propaganda Village. Located within the Korean Demilitarized Zone, DMZ, Kijongdong is a village shrouded in both literal and metaphorical fog. Built in the 1950s, it was intended to display the wealth and prosperity of the North Korean regime to the south. However, binoculars and telescopic lenses from the south have revealed that the village may be nothing more than a facade. Empty buildings with no real residents, only lights that switch on and off automatically. Some defectors and South Korean sources allege that Kijongdong is an elaborate ghost town, not just in metaphorical terms, but quite possibly in a paranormal sense. The idea that an entire village was built and never inhabited, yet maintains the appearance of life, gives it an eerie, surreal quality. Whispers of voices, strange radio interference, and unexplained shadows seen from the South Korean side of the DMZ have all contributed to its haunted reputation. Newbom Garden, the haunted restaurant. Newbom Garden was once a bustling restaurant in Pyongyang, said to be frequented by both high-ranking officials and foreign dignitaries. Now abandoned, it is a place surrounded by ghost stories. Former workers, speaking anonymously, have claimed to experience chilling encounters, tables rearranging themselves, utensils flying across the room, and ghostly figures seen wandering the premises late at night. According to North Korean rumors,
The restaurant was closed after several unexplained deaths and illnesses occurred among its staff. One legend says that the spirits of those who were wronged or poisoned there, possibly for political reasons, still roam the building, unable to rest. While difficult to verify, stories like these reflect a deeper societal anxiety surrounding betrayal, loyalty, and surveillance in North Korea's highly controlled environment. Camp 22, a site of unimaginable horror. Camp 22, officially known as Horyong Concentration Camp, was a maximum security prison facility reportedly shut down in 2012. It is perhaps one of the most terrifying places in modern North Korean history. Former prisoners and guards who escaped have spoken of inhumane experiments, starvation, executions, and generational punishment. According to defectors, entire families were sent to die here, often for crimes as minor as questioning the regime. Though the site has allegedly been decommissioned, it is still off limits and surrounded by secrecy. Stories of the restless souls of thousands who perished there have surfaced. Spiritual disturbances, screams echoing through the valley, and an unnatural silence that engulfs the entire area. For many, even discussing Camp 22 is considered taboo, as it symbolizes some of the darkest human rights abuses of our time. In a culture where ghost stories often serve as metaphors for unresolved trauma, the legacy of Camp 22 likely continues in whispered folklore, even if it's never openly acknowledged. Yanggakdo International Hotel. Mystery on the 5th floor. Unlike the Ryugyong Hotel, the Yanggakdo International Hotel is one of the few places where foreign tourists are allowed to stay in Pyongyang. However, even this supposedly accessible location has secrets. Guests have noted that the elevator skips the 5th floor, which is said to be off limits. The floor is reportedly a service level, but conspiracy theories and eyewitness accounts suggest otherwise. Some travelers claim they pressed the button for the 5th floor and the elevator stopped there, only to reveal a dimly lit hallway lined with propaganda posters, surveillance equipment, and locked doors. Others report feeling watched, hearing whispers, or sensing a cold presence when standing near the 5th floor level. These experiences, real or imagined, are compounded by the fact that tourists in North Korea are strictly chaperoned, making any unauthorized discovery feel both thrilling and terrifying. The hotel, designed to give a favorable impression of the regime, instead exudes an aura of surveillance and secrecy that's ripe for ghost stories. The role of folklore and cultural silence. While North Korea lacks the open internet forums or horror cinema culture that fuels paranormal legends in other nations, stories still exist, passed quietly among defectors, whispered by tour guides, or hinted at in memoirs. Much of this oral tradition stems not only from actual belief in ghosts, but from a deeper psychological need to process trauma, history, and state repression. In Korean culture more broadly, ghosts, known as wishin, are often associated with untimely or unjust deaths. The notion of spirits lingering due to unresolved injustice resonates powerfully, especially in a country like North Korea, where many families live with the pain of disappeared relatives or secret executions. Paranormal stories become vessels for grief, anxiety, and even resistance. Challenges in documentation. It's important to recognize that these stories are difficult to verify due to restricted access to information. Foreign journalists and investigators are not allowed to freely explore North Korea. Propaganda and misinformation. Both the regime and outside sources may manipulate narratives for political purposes. Lack of first-hand testimony. Most tales are second-hand, filtered through defectors or rare tourists with limited access. Nonetheless, the very existence of such stories speaks volumes. Even in one of the most tightly controlled societies on Earth, the supernatural finds a way to express what cannot be openly said. While the haunted locations of North Korea may remain largely undocumented and inaccessible, the legends and rumors surrounding places like Ryugyong Hotel, Kijongdong, Nobom Garden, Camp 22, and Yanggakdo Hotel reveal a society deeply entwined with history, secrecy, and silent suffering. Whether these places are truly haunted in the paranormal sense, or haunted by the memories and injustices of the past, they stand as eerie monuments in one of the world's most mysterious nations. Let me know if you'd like a visual map of the
हेलो बहनों भाइयों, आपको आनंद जरूर आ रहा होगा। कैसी लगी आपको ये हमारी आज की कहानी? पूरी वीडियो को देखने के बाद आखिरी में कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया। चलिए एंजॉय करते रहिए। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। अगर जो एक डायन की आत्मा और एक परिवार पर उसके प्रभाव को दिखाती है। आइए इसे हिंदी में विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत एक गुफा में होती है, जहां कुछ पुजारी एक छोटे लड़के को पिंजरे में बंद करके घेर लेते हैं। लड़का उनसे दया की भीख मांगता है और पूछता है कि वे उससे क्या चाहते हैं। एक पुजारी कहता है कि उसके खून और मांस से कुछ नहीं मिलेगा। तभी एक युवती पिंजरे में आती है, अपने गले से एक चमगादड़ की लॉकेट निकालती है, डायन में बदल जाती है और उस लड़के को ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह का प्रवेश। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह को पता चलता है कि पास के जंगल में नाम की एक डायन तबाही मचा रही है। एक रात उसकी छोटी बेटी उसे बताती है कि गांव वालों ने बाहर एक शव देखा है। ठाकुर बाहर जाकर देखता है कि वह वही लड़का है जिसे डायन ने मारा है। वह खुद इस मामले की जांच करने का फैसला करता है। उसका छोटा भाई समीर प्रताप डायन को मारने के लिए निकलता है। ठाकुर उसे एक आग का लॉकेट देता है। डायन नकीता की मौत और बाबा का षड्यंत्र। समीर जंगल में एक लड़की को काट कर दिखाता है। हवेली पहुंचकर वह उसे बहकाता है और उसका लॉकेट छीन लेता है, जिससे वह डायन नकीता में बदल जाती है। समीर के लॉकेट से उसे कमजोर करता है और गांव वाले उसे मार डालते हैं। पर एक तांत्रिक बाबा उसकी लाश चुरा लेता है और उसे एक ताबूत में रखकर वादा करता है कि उसे नया शरीर मिलेगा। जैस्मिन पर डायन का कब्जा। समीर अपनी भतीजी जैस्मिन को मसूरी के बोर्डिंग स्कूल छोड़ने जाता है, पर रास्ते में कार बंद हो जाती है। वह पानी लेने जाता है, तभी बाबा जैस्मिन को सम्मोहित करता है और उसके बाल लेकर ताबूत में रख देता है। जैस्मिन पर डायन की आत्मा का कब्जा हो जाता है। समीर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मारा जाता है। बाबा जैस्मिन को हवेली ले आता है और ठाकुर से कहता है कि समीर नदी में बह गया। 2 साल बाद ठाकुर को साहिला का पत्र मिलता है, जो परीक्षा में प्रथम आई है। जैस्मिन अब जवान हो गई है और उसका अजीब बर्ताव सबको परेशान करता है। ठाकुर साहिला को हवेली बुलाता है, पर बाबा उसके अपहरण की कोशिश करता है। उसे एक युवक हेमंत बचाता है। जैस्मिन एक मैकेनिक से मिलती है, उसे हवेली बुलाती है और संबंध बनाती है। फिर डायन उस आदमी को मार देता है। जैस्मिन की सच्चाई उजागर। साहिला जैस्मिन के कमरे में डरावनी चीजें देखती है और ठाकुर को बताती है। डॉक्टर जैस्मिन की जांच करता है तो जैस्मिन अपने भीतर की डायन की आत्मा को दिखाती है और पूरे परिवार को मारने की धमकी देती है। डॉक्टर भागते समय मारा जाता है। एक एक कर लोग मरते हैं। अंतिम लड़ाई। हेमंत और साहिला बाबा का पीछा करते हुए वीराना पहुंचते हैं, जहां उन्हें समीर जीवित मिलता है। वे सब ठाकुर को सच्चाई बताते हैं। बाबा जैस्मिन को मारकर डायन को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है, पर समीर अपनी जान देकर जैस्मिन को बचा लेता है और डायन की आत्मा को उसकी पुरानी लाश में भेज देता है। अंत में डायन को ताबूत में बंद करके मंदिर ले जाया जाता है। जैसे ही ताबूत खुलता है, वह भगवान की मूर्ति के सामने आकर जलकर नष्ट हो जाती है। यह कहानी अंधविश्वास,
तंत्र मंत्र और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। इसमें परिवार, बलिदान और प्रेम की भावना को भी जोड़ा गया है। अगर चाहो तो मैं इस अगर आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बेल और लाइक तीनों बटनों को दबाना है और इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइट पर आपको सिर्फ पोस्ट कर देना है अपनी यादों को। इतना सा काम है। और अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स के शौकीन हैं तो बॉलीवुड मैक्सिमम म्यूजिक इसको यूट्यूब पर सर्च कर लें और कोई भी वीडियो पूरा देखने के बाद सब्सक्राइब बेल और लाइक वहाँ पर भी दबा दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। बाकी चीज़ को आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बेल और लाइक तीनों बटनों को दबाना है और इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइट पर आपको सिर्फ पोस्ट कर देना है अपनी यादों को। हेलो बहन भाइयों, आप देख रहे हैं एसपी उन्नति एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसके नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को, बेल आइकॉन को और लाइक बटन तीनों बटन को दबाने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट आदि ग्रुपों में इस वीडियो के लिंक को और इस चैनल के लिंक को शेयर कर देना चाहिए। चलिए देखते हैं आपके साथ आज की ये हॉरर स्टोरी। लेट्स बिगिन। Got it. Haunted places in Japan, created by Adventure. Welcome, dear friends, to a spine-chilling journey through Japan's darkest and most terrifying corners. Today, we will uncover the 10 most haunted places in Japan, where restless spirits still linger and eerie legends come alive. From cursed forests to haunted tunnels, each location has its own tale of mystery and horror. So are you brave enough to step into the shadows? Let's begin. 1. Aokigahara Forest, Yamanashi. At the base of Mount Fuji lies the infamous Aokigahara Forest, known worldwide as the Suicide Forest. This dense jungle of towering trees is so thick that sunlight barely reaches the ground, leaving the forest floor in an eternal twilight. For decades, this place has been a hotspot for suicides, where people driven by heartbreak, depression, or financial ruin come to end their lives. Many survivors claim they felt an invisible force pulling them deeper inside. Long ago, the practice of upasuit, abandoning the elderly to die, was followed here. Locals believe the spirits of those abandoned still wander the forest, whispering through the leaves and luring the living deeper into the maze. Many who enter never return. 2. Okiku's Well, Himeji Castle, Hyogo. Within the serene grounds of Himeji Castle lies Okiku's Well, a simple stone well with a terrifying legend. Okiku, a loyal servant, was falsely accused by a cruel samurai of breaking one of 10 precious plates.
Despite her innocence, she was tortured and finally thrown into the well to die. Since then, visitors hear her mournful voice at night counting plates. 1, 2, 3, stopping at 9, followed by a blood-curdling scream. Some have even seen her ghost rise from the well, drenched in water, her long black hair dripping as she wanders the castle grounds seeking justice. Number 3, Oiranbuchi Bridge, Yamanashi. High above a steep gorge stands the Oiranbuchi Bridge, a place of beauty hiding her tale of betrayal and bloodshed. During the Sengoku period, a warlord discovered gold mines in the region. To keep it secret, he lured a group of courtesans to the bridge under the pretense of celebration. Dressed in their finest clothes, the women admired the view, until soldiers cut the ropes of the bridge, plunging them into the raging river below. To this day, people crossing the bridge report sudden drops in temperature, the sound of wailing women, and even spectral figures in kimono drifting across the bridge. At night, locals warn, the spirits may mistake you for their betrayers and drag you into the abyss. 4. Old Chuetsu Tunnel, Fukuoka. Now abandoned and crumbling, the old Chuetsu Tunnel is a hotspot of ghostly activity. During construction, many workers died in acts of subscribe. Some say occult rituals were even performed inside. Visitors now report phantom footsteps echoing in the pitch darkness, icy winds, and ghostly figures lurking in the shadows. One chilling story tells of a motorcyclist who drove through at night. When he glanced in his rearview mirror, a pale woman in white sat silently on the back seat of his bike, only to vanish into thin air moments later. Number 5. Camp Hansen, Gate 3, Okinawa. This American military base has long been haunted by tales of a ghostly marine. At Gate 3, soldiers and locals have reported seeing a man in a blood-soaked World War II uniform waving down cars. Drivers stop, thinking he's a lost soldier, but as they approach, he disappears. Guards hear heavy footsteps, see shadowy figures darting across the road, and feel icy chills in the night air. It is believed this is the spirit of a Marine still dutifully patrolling his post, trapped in an endless loop of war. Number 6. The Round Schoolhouse, Hokkaido. In the remote wilderness of Hokkaido stands an abandoned circular schoolhouse, infamous for its terrifying history. The school was shut down after students and teachers mysteriously disappeared or died under strange circumstances. Locals whisper that a dark entity haunts the building. Adventurers who dare to enter describe hearing children's laughter followed by chilling screams, shadows moving on their own, and doors slamming shut. In one story, thrill seekers entered late at night, only for one member of the group to vanish forever, never seen again. Number 7. Unati Village, Fukuoka. Once a thriving village, Unati is now a ghost town lost in time. In the 1970s, a brutal massacre of a family took place here, leaving behind a curse that lingers even today. Those who visit describe hearing chains rattling, disembodied footsteps, and ghostly cries. Some see shadowy figures darting between ruined houses. One traveler saw a woman in tattered clothes standing near an old well. As she turned, her eyes glowed red with an unnatural light. His car later stalled on the road out of town, and he was never seen again. At 8. Himuro Residence, Tokyo. This once grand estate is now in ruins, infamous for the gruesome fate of the Himuro family. Legends say the family practiced forbidden rituals involving blood sacrifice in their quest for immortality. Their obsession drove them insane, and one by one, they perished under horrific circumstances. Visitors today speak of suffocating atmospheres, whispers in the dark, and apparitions of terrified family members. Ghost hunters once entered the house, only to encounter a pale woman in white with long black hair. They fled, but one never came out. Number 9. Dorodo Ruins, Tokyo. Hidden in the bustling city of Tokyo, the Dorodo Ruins mark the site of a temple where monks once massacred each other during the Edo period. The land soaked up their pain, trapping their restless spirits. Visitors hear chanting carried by the wind, see fleeting shadows, and feel invisible eyes watching them. One woman who explored alone swore she saw a glowing-eyed monk in tattered robes. As she tried to run, the ground itself seemed to shift and trap her. Even after escaping, the chanting still echoed in her ears. Now 10. Kotaki Tunnel, Kyoto. Built in 1927, the Kotaki Tunnel stretches 444 meters, an ominous number in Japanese culture, where 4 is associated with death. During construction, countless workers died,
And over time, the tunnel became infamous for suicides and fatal car crashes. Drivers report ghostly figures appearing suddenly in the headlights, or a cold presence sitting silently in the back seat. A mirror inside the tunnel is said to reflect not your own image, but that of the dead who linger within. Some drivers have even gone mad and perished after encountering spirits here. Conclusion. So friends, these were the 10 most haunted places in Japan. Locations where history, tragedy, and restless spirits intertwine. Each place carries its own chilling tale, daring only the bravest to explore. Would you ever visit these haunted places yourself? Or would you rather let the spirits remain undisturbed in their eternal night? हेलो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ, हमारा काम है आपके लिए शानदार से शानदार वीडियो लाना। और आपसे एक ही अनुरोध है कि आप नीचे की हुए सब्सक्राइब और लाइक को नहीं अभी तक दबाया है तो क्लिक कर दें, और इस वीडियो को और इस चैनल के लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों को भी आनंद आ सके जैसा कि अभी अभी आपको आया है। तो इसी तरह सपोर्ट और बड़ा प्यार बनाए रखें और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। शुक्रिया। Bell icon below. Hello, ladies and gentlemen. This is Admin Sunny's SP Unati Horror Stories World. Before starting this video, I request you to hit the subscribe bell and like under this video and share on WhatsApp, Facebook, Instagram and Twitter groups to others. In today's video, I will going to tell you about Instagram और Twitter आदि लिंकों में इस वीडियो के लिंक को और इस चैनल के लिंक को शेयर कर देना चाहिए। चलिए देखते हैं आपके साथ आज ये हॉरर स्टोरी। No copyright claim. This is a private explained movie. यारो, पता लड़की कैसे पटाई जाती है? खबर किया था। ये क्या हो गया? इसकी तो सांस रुक गई। Hello, admin Sunny here. This is the explained video. No claim, no copyright claim. This is the story of the movie Khudar. यहाँ पर एक बीवी जो अपने आदमी का इंतजार करते करते रात में इतना ज्यादा नशे में आ जाती है कि शराब की लत में पड़ जाती है। एक दिन उनके बीच में जब झगड़ा होता है तो अचानक वो कांच की एक बोतल पर और एक टेबल पर गिरकर मर जाती है। लेकिन जब वो कब्रिस्तान लेकर उसको पहुंचते हैं तो वो जीवित होती है। आदमी का दूसरे औरत के साथ बार बार अफेयर देखकर औरत इतनी परेशान हो जाती है। अचानक इन दोनों के बीच जब झगड़ा होता है तो इनकी मौत हो जाती है। मरने के बाद ये आत्मा पहुंचती है फादर के पास चर्च में। God, do not count our sins, but those of our forefathers. Do not punish our offenses. Lead us not into the temptation, Father. फादर को लगता है कि ये वही लड़की है जिसको वो जानते हैं, लेकिन जब वो उसको दास्तान सुनाती है, यहाँ पर दो अय्याश किस्म के दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं और
वो इसी चक्कर में अपनी बीवी को मार बैठते हैं। और सीधे घर पर जाओ। और वो नहीं आता। तो आज रात मैं खुद को खत्म कर दूंगी। अरे क्या तुम्हारी बात होती है? मैं तो कहता हूँ कि आप खत्म कर दो। एक रात गलत नियत रखकर उसका हस्बैंड लेट आता है और उसके सामने मधुर समझता है। उसकी बीवी उसको लुभाने की कोशिश करती है। तालमेल बिगड़ा रहता है कि इसी बीच वक्त मिल जाता है जिसका एक दोस्त जो इसके साथ काम करता है और वो इसकी बीवी का फायदा उठाने की करता है कोशिश। एक रात जब वो बैठकर शराब पी रही होती है, इसका यार दोस्त अचानक दाखिल हो जाता है और समझाने बुझाने के चक्कर में इसके आदमी की पड़ जाती है उस पर नजर और हो जाता है मार धाड़ की समस्या और इस चक्कर में ये लड़की मारी जाती है। उसकी बीवी की मदमस्त जवानी को देखते हुए इसके दोस्त की नीयत खराब हो जाती है। वो उसके लिए एक ड्रिंक तैयार करता है। सब ठीक है। कैथरीन, अपने आप को संभालो। और संभालो के चक्कर में ये भी समझ नहीं पाता है। इस बीच उसका आदमी वहाँ आ टपकता है और मुसीबत शुरू हो जाती है। इसे गले लगाओ। लेकिन मुझे ऐसा बनाया किसने? इन दोनों की जद्दोजहद में इस लड़की की मौत हो जाती है। तुम्हें ऐसा नहीं बनाया, तुम ऐसी ही हो। You are a bloody whore. Shut up! You shut up. मारोगे मुझे? मारो ना। Hit me. I said hit me. Hit me. मारो। दोनों की जद्दोजहद में इसके आदमी के हाथों धक्का लगने पर टेबल पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। पूरे चेहरे पर कांच के टुकड़े गड़ जाते हैं। ये चीज वो नौकरानी देख लेती है। पुलिस को बता देगा। पुलिस को हम सब कुछ बता देगा। ये लोग उस नौकरानी को दबा देते हैं। वो घबरा जाती है और इस बीच रात में इसकी प्रेत आत्मा इनके बंगले पर पहुंच जाती है और फादर के पास पहुंच जाती है। फादर, अब मेरे बेटी से एक पल भी नहीं रहूंगी। देखा उसने मेरा क्या हाल कर दिया। उसने और उसके दोस्त चक्की ने मेरी आंखों के सामने एक कब्र खोदी। फादर को वो सारी दास्तान सुनाती है कि कैसे कब्र खोदकर मुझे जिंदा दफना दिया और उसके बाद आगे जो सुनाती है उससे उसके फादर का दिमाग खराब हो जाता है, चर्च के फादर का। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। Rest in peace, my child. मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आपकी हमदर्दी नहीं तो वरना मैं तो कब की मर चुकी होती नहीं कैथरीन, तुम मर चुकी हो। मिट्टी में दफन हो चुका है और इस फादर उसको बताते हैं कि तुम दफन हो चुकी हो और कॉफिन से जो निकली है
वो तुम्हारी आत्मा बदला लेने के लिए निकली है। उस कब्र की घुटन से जो कॉफिन तोड़ कर बाहर आई है, वो तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारा जिस्म अब भी उस कब्र में दफन है। ऐसा नहीं हो सकता। और मरने के बाद वो पहुंचती है बदला लेने के लिए अपने उसी बंगले में, अपने भयानक अंदाज में। इस बीच नौकरानी किसी से बात करती हुई इसके आदमी को नजर आ रही है। किससे बातें कर रही थी? कैथरीन में साहब। मैं पूछता हूँ, कौन है तू? ये बंगले पर वो हंगामा मचाना शुरू करती है और जीना मुहाल कर देती है उसके दोस्त का। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। तुम तो आ चुकी हो। पहले वो रोटी का मिलकर तुम लोगों ने मुझे जिंदा दफन किया था, लेकिन मैं लौट आई हूँ तुमसे और रवि से अपनी मौत का बदला लेने के लिए लौट आई हूँ। और वो इस तरीके से अपना इंतकाम लेना शुरू करती है और आखिरी में अपने आदमी को वहीं ले जाती है जब वो अपनी आशुका के साथ गाड़ी पे जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी की छत पर आकर गिरती है। उसकी प्रेमिका को भी काफी परेशान करती है उसके घर पर जाकर और अपने आदमी को ले जाती है अपनी कब्र के अंदर। वहां से काफी बचने के बाद भी उसका आदमी का वो पीछा नहीं छोड़ती और उसको ले जाती है अपनी कब्र के अंदर। तुम भी वही घुटन महसूस करोगे। और कितना तड़पाओगे मुझे? वैसे भी जीते जी तो तुमने मुझे मार ही दिया। अभी मरना बाकी है। तुमने मुझे कब्र में फंसा दिया। आज उसी कब्र में मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। और वो छलांग लगा देती है, अपने आदमी की गर्दन पकड़कर खींच कर ले जाती है। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, और आज के बाद तुम यहीं रहोगे मेरे साथ इसी कब्र में। और इस तरीके से प्रेम कहानी का अंत होता है। जब कभी इंसान एक इंसान के साथ बुरा करता है वही उसके साथ पेश आता है। चैनल को सब्सक्राइब बेल और लाइक दबा लें। थैंक यू। हेलो बहन भाई, आप देख रहे हैं एसपी उन्नति एनिमेटेड हॉरर स्टोरी। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को
बेल आइकॉन को और लाइक बटन तीनों बटन दबाने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट आदि ग्रुपों में इस वीडियो के लिंक को और इस चैनल के लिंक को शेयर कर देना चाहिए। चलिए देखते हैं आपके साथ आज की ये हॉरर स्टोरी। लेट्स बिगिन। बटन को बेल आइकॉन को और लाइक बटन तीनों बटन दबाने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट आदि ग्रुपों में इस वीडियो के लिंक को और इस चैनल के लिंक को शेयर कर देना चाहिए। उत्तर कोरिया के भूतिया स्थान, रहस्यों और अफवाहों से घिरी कहानी। एस्ट्रिड शब्दों में हिंदी में। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो अपने सख्त शासन, सीमित जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय दुनिया से कटे होने के लिए जाना जाता है। इस देश के अंदर क्या होता है, इसके बारे में जानना बेहद मुश्किल है। फिर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जो रहस्यमय, डरावने और भूतिया कहे जाते हैं। हालांकि इन स्थानों से जुड़ी कहानियां प्रामाणिक नहीं मानी जाती, फिर भी ये अफवाहें और कथाएं उत्तर कोरिया के रहस्यपूर्ण स्वभाव को और गहराई देती है। रयुग्योंग होटल, होटल ऑफ डूम। रयुग्योंग होटल को उत्तर कोरिया का सबसे कुख्यात भवन माना जाता है। ये एक 4 मंजिला पिरामिड के आकार की गगनचुंबी इमारत है, जिसकी शुरुआत गो में हुई थी। इसका उद्देश्य दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाना था, लेकिन इस रूप में आर्थिक संकट के चलते इसका निर्माण रोक दिया गया। 20 सालों तक यह अधूरी, कंक्रीट की ढांचे जैसी इमारत बिना खिड़कियों और रोशनी के खड़ी रही। स्थानीय लोगों में यह अफवाह फैल गई कि इसमें आत्माओं का वास है। कहा जाता है कि रात को इसमें बिना बिजली के भी रोशनी दिखती है और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि 2008 में फिर से इसका बाहरी निर्माण शुरू हुआ। यह आज भी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है और पर्यटकों को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। इसकी अधूरी स्थिति और रहस्यमय इतिहास ने इसे होटल ऑफ डूम बना दिया है। किजोंग डोंग, प्रोपेगेंडा विलेज। किजोंग डोंग उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच मौजूद डीएमजी, डिमिलिटराइज्ड स्थित एक गांव है। इसे थानफस्टीट के दश में बनाया गया था ताकि दक्षिण कोरिया को उत्तर की समृद्धि दिखाई जा सके। लेकिन दक्षिण कोरियाई निगरानी से पता चला है कि वहां कोई वास्तव में रहता नहीं है। यह बस एक दिखावटी गांव है। भूतिया कहानियों के अनुसार यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन रात को घरों में रोशनी जलती है, लाउडस्पीकर पर देशभक्ति गीत बजते हैं और कभी-कभी वहां से अजीब साए और आवाजें देखी सुनी जाती है। ये जगह एक तरह का भूतिया शो बन गई है, जिसमें जीवन का भ्रम दिया जाता है, लेकिन असल में सब कुछ खोखला है। न्यूलबोम गार्डन, एक भूतिया रेस्टोरेंट। न्यूलबोम गार्डन का प्योंगयांग में एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था, जहां सरकार के अधिकारी और विदेशी मेहमान भोजन करने आते थे। लेकिन अब ये पूरी तरह से बंद और सुनसान पड़ा है। कथाओं के अनुसार यहाँ कई अजीब घटनाएं घटी, जैसे मेजें अपने आप हिलना, प्लेटें उड़कर गिरना और सफेद कपड़ों में आकृतियां दिखना। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ जिन लोगों की रहस्य में मौत हुई,
या जिन्हें जहर देकर मारा गया, उनकी आत्माएं आज भी इस इमारत में भटकती हैं। कैंप ध्वस्त, डरावनी हकीकत का प्रतीक कैंप डिडी को आधिकारिक रूप से होरियों कंसंट्रेशन कैंप कहा जाता है। ये एक बंदी गृह था जिसे 2000 में बंद कर दिया गया। यहाँ उन लोगों को भेजा जाता था जिन्हें सरकार के खिलाफ बोलने का दोषी माना जाता था। भागे हुए कैदियों और पूर्व कर्मचारियों के अनुसार यहाँ नरसंहार, भूखमरी, जबरन श्रम और मानव प्रयोग जैसे भयानक अपराध हुए। ऐसी जगहें स्वाभाविक रूप से भूतिया बन जाती हैं और कहा जाता है कि वहां आज भी मरे हुए कैदियों की आत्माएं भटकती हैं। जंगलों में चीखने की आवाजें, अजीब रोशनी और एक गहरी खामोशी इस क्षेत्र को और डरावना बना देती है। यांगाक्तो इंटरनेशनल होटल, 5वीं मंजिल का रहस्य। यांगाक्तो होटल उन कुछ जगहों में से एक है जहां विदेशी पर्यटकों को ठहरने की अनुमति दी जाती है, लेकिन इस होटल की 5वीं मंजिल को लेकर रहस्य बना हुआ है। लिफ्ट उस मंजिल पर नहीं रुकती और उसे सर्विस फ्लोर कहा जाता है। कुछ पर्यटकों ने दावा किया है कि गलती से लिफ्ट वहां रुक गई और उन्होंने वहां अंधेरा, दीवारों पर सरकारी प्रचार पोस्टर और बंद दरवाजे देखे। कुछ ने कहा कि वहां उन्हें किसी की उपस्थिति महसूस हुई, अजीब आवाजें आईं या कुछ छुपा हुआ महसूस हुआ। इस मंजिल का रहस्य और सुरक्षा का स्तर होटल को एक रहस्यमय और डरावना अनुभव बना देता है। उत्तर कोरियाई संस्कृति और भूतिया कथाएं। कोरियाई संस्कृति में आत्माओं और भूतों की गहरी है। ऐसा माना जाता है कि जिनकी मौत अन्यायपूर्ण या असमय होती है, उनकी आत्माएं संसार में भटकती हैं। उत्तर कोरिया की कड़ी शासन प्रणाली, गुप्त मौतें और सामाजिक दमन इन कहानियों को और बल देती है। भूतिया कथाएं कई बार प्रतीकात्मक रूप से भी समाज के दर्द और भय को दर्शाती हैं। वे उन भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम होती है जिन्हें खुलकर कहा नहीं जा सकता। निष्कर्ष, उत्तर कोरिया के भूतिया स्थलों की कहानियां पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, लेकिन इनसे जुड़ी लोक कथाएं और अफवाहें देश की रहस्यमय प्रकृति और इतिहास की परछाइयों को उजागर करती हैं। रयुग्योंग होटल, केजोंगडोंग, न्यूलबोम गार्डन, कैंप ताइटिटी और यांगाक्तो होटल, ये सभी स्थान देश के अतीत, राजनीति और संस्कृति के गहरे रहस्यों से जुड़े हुए हैं। मेरे भैया को आनंद जरूर आ रहा होगा। कैसी लगी आपको ये हमारी आज की कहानी? पूरी वीडियो को देखने के बाद आखिरी में कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया। चलिए एंजॉय करते रहिए। हेलो बहनों भाइयों, आप देख रहे हैं एसपी उन्नति एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसके नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को, बेल आइकॉन को और लाइक बटन, तीनों बटन दबाने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट आदि ग्रुपों में इस वीडियो के लिंक को और इस चैनल के लिंक को शेयर कर देना चाहिए। चलिए देखते हैं आपके साथ आज की ये हॉरर स्टोरी। Let's begin. 1,000-word detailed explanation of the haunted places in China and Hong Kong that you listed, written in a clean narrative style. Haunted places in China and Hong Kong. China, one of the world's oldest civilizations, is a land filled with myths, legends, and stories of the supernatural. The country's long dynastic history is not only marked by grand palaces, wars, and revolutions, but also by tales of betrayal, tragedy, and lingering spirits. Over centuries, places associated with sorrow, violent deaths, and political upheaval have become infamous for paranormal activity.
Locals and tourists alike whisper about ghostly apparitions, mysterious sounds, and strange energies in these historic sites. Let us explore some of the most chilling locations that believers claim are haunted across Beijing, Hebei, Henan, Hong Kong, Macau, and Shanghai. Chaonei number 81. Known as the most haunted house in Beijing, Chaonei number 81 is an abandoned mansion in the Chaoyangmen neighborhood. Built in the 20th century, it has a tragic legend attached to it. According to popular belief, the mansion was once the home of a Kuomintang official who fled Beijing when communist forces approached. His wife or mistress, heartbroken at being abandoned, reportedly took her own life inside the house. Since then, locals claim the ghost of a sorrowful woman roams its halls. The eerie atmosphere of the decaying mansion gained widespread attention after it was featured in the 2014 horror film, The House That Never Dies. Despite attempts to restore or repurpose the building, many residents avoided, considering it cursed. After the Forbidden City, Beijing. The Forbidden City, a vast palace complex in the heart of Beijing, was home to Chinese emperors for centuries. Behind its majestic red walls lies a history filled with palace intrigues, betrayals, executions, and murders. Believers say these violent past events left behind restless spirits. Visitors and guards have reported seeing ghostly figures, hearing footsteps in deserted corridors, and feeling sudden chills. However, officials deny such claims, attributing the stories to imagination. Nonetheless, the Forbidden City remains one of the most mentioned haunted landmarks in China, with its silence at night adding to its mystique. 3. The former residence of Cao Shixi, Beijing. Cao Shixi, the author of Dream of the Red Chamber, one of China's greatest literary works, lived here during his final years. His family, once prominent under the Kangxi Emperor, fell from power after Yongzheng's rise. In this house, Cao wrote about loss and decline, themes mirroring his own life. Today, the residence is a photography studio, yet many locals claim strange happenings at night. Some report hearing traditional instruments playing or a woman's voice softly reciting poetry. To literature lovers, this haunting only deepens the house's tragic horror. Master 4, Prince Gong's Mansion, Beijing. The Gong Wangfu Mansion was first owned by He Shen, a notoriously corrupt Qing dynasty official. Despite his wealth and 80 concubines, his family faced great tragedy. After his youngest son's death in battle, He Shen's wife reportedly fell into depression and illness, eventually passing away. Visitors claim her sorrowful spirit lingers in the mansion, haunting its elaborate halls. 5. The Great Wall of China. Stretching thousands of kilometers, the Great Wall is both a symbol of defense and a place of suffering. Countless soldiers and workers perished during its construction and battles. Believers say their spirits remain bound to the wall. Ghostly shadows, sounds of marching, and cries have been reported by travelers. The TV series Destination Truth even conducted an overnight investigation here, adding to its ghostly reputation. Number 6. Huguang Huibu, Beijing. Built in 1807, the Huguang Guild Hall served as a home for the poor and is now an opera house, but the site was built on an ancient graveyard. A local legend warns that if one throws a stone into the courtyard, an unseen voice will scold them. Even today, eerie tales surround performances at the hall. 7. The Tomb of General Yuan, Beijing. General Yuan was a loyal Ming Dynasty officer betrayed by his emperor, who executed him after believing false rumors. His tomb in Beijing's Chongwen district is said to be haunted by his vengeful spirit, forever mourning the injustice he suffered. 8. Yunshan Fandian Hotel, Hebei. Located in Chengde, Hebei province, this hotel is reported to host wandering spirits. Guests have complained of unexplained noises, sudden cold spots, and the feeling of being watched. Despite its tourist appeal, the stories discourage some visitors from staying overnight. 9. Fengmen Village, Henan. Hidden in a remote valley, Fengmen Village consists of abandoned Qing-style houses. The settlement is empty, yet hikers report spectral voices calling their names. A wooden armchair in the village is considered cursed. Those who sit on it allegedly face misfortune. Its deserted atmosphere makes it one of China's eeriest ghost towns. Haunted places in Hong Kong. Hong Kong, with its colonial past and World War II tragedies, is also home to chilling stories of restless spirits. Nam Kwu Terrace, Wan Chai.
Once rumored to be a Japanese military brothel, this old mansion is said to be haunted by female ghosts who suffered there. Sai Yingpeng Community Complex, formerly a nurse's dormitory, execution site, and later a mental hospital, it carries a heavy history. Locals speak of apparitions and screams at night. Twin Mun Road, a highway notorious for accidents, often blamed on spirits suddenly appearing in front of drivers. Authorities cite engineering flaws, but believers remain unconvinced. Tat Tak School, said to be built on a massacre site, the abandoned school is feared by many. Legends tell of a headmistress's suicide, adding to its haunted reputation. Nova 31, Granville Road, once an apartment where the infamous Hello Kitty murder took place. Residents claim to see a woman's ghost near the site. Sung Sai Yuan, Taipo. After a deadly landslide in 1955, visitors say the victim's spirits haunt the picnic grounds. Other haunted spots include the Mongman Y building, once a morgue, the Hong Kong Museum of Coastal Defense, and even King George V School, where students whisper about haunted halls. Tash Macau. Macau, known for its casinos and colonial architecture, also carries spectral tales. Calzada do Amparo, believed haunted by ghosts of people who starved during World War II. Estrada do Raposo, once a burial ground for the poor, it is feared at night. Gia Hill, joggers claim to encounter hungry spirits here. Tap Sack Square, construction was abandoned due to strange apparitions and accidents. Shanghai, Caobao Road Station, a metro station said to be haunted by strange figures. Chu Mansion, built by two wealthy brothers who mysteriously disappeared. It is linked with animal attacks and ghostly sightings. Wukong Mansion, Normandy Apartments. During the Cultural Revolution, many intellectuals committed suicide here. Believers claim their spirits still roam, giving it the nickname the Diving Board. Conclusion. China and Hong Kong's haunted places reflect more than just ghost stories. They reveal deep layers of history, suffering, and memory. From imperial betrayals in Beijing's Forbidden City to wartime tragedies in Hong Kong, these locations hold the echoes of the past. Whether one believes in spirits or not, visiting these places offers a glimpse into the emotional scars left by centuries of human struggle. Word count, 1015. Would you like me to also make a cinematic... हेलो बहन भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ, हमारा काम है आपके लिए शानदार से शानदार वीडियो लाना, और आपसे एक ही अनुरोध है कि आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बेल और लाइक को नहीं अभी तक दबाया है तो क्लिक कर दें, और इस वीडियो को और इस चैनल के लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर शेयर कर दे ताकि बाकी लोगों को भी आनंद आ सके जैसा कि अभी अभी आपको आया है। तो इसी तरह सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखें और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। शुक्रिया।